Good morning, children. Welcome back. Moving ahead with the same chapter of EVS 1, that is chapter number 16, Water. In the previous video, we have discussed how the water is getting polluted and disposal of wastewater. Now, today we are going to start with some more points in the same chapter. That is purification of water along with its activity, water works and methods of purification. So let's start. Here an activity is given on page number 78. Try this. Take a plastic bottle, tie a clean piece of cloth over its mouth. Means on a plastic bottle you have to tie, on its mouth you have to tie clean piece of cloth. Okay, it should be cotton. Cut off the base of the bottle. Bottle के base को क्या करना है? You have to cut. Okay. Hold the bottle upside down as you can see in the figure. Okay, in the textbook diagram is given. Okay. Pour some powdered coal into it. Means जो प्लास्टिक की बोतल को आपने ऊपर से डाला रखा है, that side you have to put what? Coal powder. Coal means कोयला. Okay. Then add fine sand. Means बारीक जो रेती होती है, that you have to add. And lastly, coarse sand to make 3 different layers inside the bottle as shown in the diagram. See, you can see in the diagram here powdered coal is the first layer, second is fine sand and third one is coarse. Means coarse sand is having pebbles of stones. Okay, pebbles, it's having pebbles. Okay. Now what we have to do next? Place the bottle on its lower cut off portion as shown in the figure. Now pour some muddy water containing some rubbish slowly into this bottle. So what kind of water you have to put? कौन सा water pour करना है? Muddy water containing rubbish. Why? Because we are showing purification. Okay. Water purify कैसे होता है? Okay. Observe the water that flows into the base of the bottle. See, in the diagram it's given water is coming drop by drop and it's collecting in the container. Okay. It appears clean. If you will observe this now, so how the water looks, it appears very clean. Okay. Of course, you have learned that there could be microorganisms in it. So what we have discussed in the previous session, that water contains microorganism also. Okay. By purification method we can just purify what? Rubbish and mud. Okay. But we cannot kill the microorganism. So by purification you cannot kill the microorganism. Okay. So what is the best way to kill the microorganism? Of course you will boil the water, because boiling kills the germs. Okay, inside it. Okay. Now we'll proceed to the next topic, water works. Here also an activity is given, but see, your activity is visit the nearest water works along with your teacher. So as we all know that due to COVID-19 pandemic we cannot go outside. Okay, and we cannot do this activity, but of course while observing and reading this you can understand what we have to do. Okay. Obtain permission to interview an official there to learn about the purification process. Here some questions are given. Okay. So here these questions you have to ask in the interview. Okay. Officer के साथ, वहाँ के officer के साथ आपको questions discuss करना है. So what are these questions? Just see. You may ask the following questions. You may ask many more questions, but here some questions are given. Okay. So question number 1 is, what source of water is used for the public water supply system? मीन्स आपको वहाँ के ऑफिसर को क्या पूछना है कि विच सोर्स यू आर यूजिंग, वाटर का कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं. आइदर इट इज़ डैम, वेल. ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर बहुत सारे होते हैं, तो कौन सा यूज़ करते हैं. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्यूरिफाइड
every day. As I explained you before कि water come to us by purified, means पहले purification होता है, then it is supplied to us. Okay, so what you have to ask them, how many liters of water are purified? Okay, because why we are asking, because we are just checking that कि ये जितना भी लीटर प्योरीफाई होता है इट इज़ जस्ट फॉर मीन्स इनफ होता है क्या नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट प्रोसेसेस आर यूज्ड टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री. एज वी ऑल नो दैट water is purified before it come to us. So but what we have to ask them, which processes they are used, मतलब क्लीन करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए और जर्म फ्री करने के लिए कौन से प्रोसेस करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट ऑर्डर आर दीज प्रोसेसेस कैरीड आउट, मीन्स कौन से ऑर्डर में वो प्रोसेसेस कैरीड आउट होते हैं, पहले कौन सा किया जाता है, व्हाट इज डन सेकेंडली एंड देन नेक्स्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज डन टू रिड द वाटर ऑफ बैड स्मेल्स, मीन्स अगर बैड स्मेल आती है तो उसके लिए वो लोग क्या प्रोसेस करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डू यू नो while traveling we often buy bottled drinking water. Of course, nowadays people are buying bottle from outside. Which bottles? We know that Bisleri and many more are there. Okay, the bottles are available at places like bus stands and railway stations. Okay, so in the previous days people used to carry the water. Okay, घर से ही पानी लेके जाते हैं. Nowadays no one is taking a single bottle from house, all are buying from outside. Okay, and what we are thinking that it is purified water. Okay, read the information about the water given on the bottle and tell others about it too. Means what you have to do after buying, first thing is that you have to check the seal. अगर बॉटल सील है तो ही आपको लेना है, अगर उसके माउथ पे जो प्लास्टिक लगा होता है सील की होती है, दैट टाइम ओनली यू हैव टू बाय. ओके, अदरवाइज यू शुड नॉट बाय द ओपन बॉटल. ओके, and first of all you have to read the information. So what kind of information you will read? Of course you will read the manufacturing date and expiry date. Okay, and for not only for water, for buying all kinds of product you have to check the manufacturing date and expiry date. Okay, ये हमको check करना है. The date of bottling and the period for which the water can be safely used is printed on the bottle. Maybe you have seen this के date उस पर मीन्स प्रिंट होती है कि कब उसको बॉटलिंग किया गया था एंड उसके कौन सी डेट के पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन बाइंग अ बॉटल. ओके, वंस यू हैव ओपनड इट द वाटर शुड नॉट बी केप्ट फॉर वेरी लॉन्ग. why you should not keep it? Because it cannot means इट कैन कैरी जर्म्स विथ इट. अगर हम एक बार ओपन करते हैं फिर बहुत देर तक वो रखा हुआ पानी पीते हैं तो उसमें जर्म्स हो सकते हैं. ओके, द एम्प्टी बॉटल मस्ट बी क्रश्ड एंड थ्रोन इनटू गार्बेज बिन सो दैट इट कैनॉट बी रीयूज. देखो बॉटल के ऊपर ये भी लिखा होता है कि क्रश द बॉटल आफ्टर यूज. वाई दिस इज रिटन सो? बिकॉज सम टाइम people are using this bottle, they can misuse it. Because see, sometime what happens, you know, if you are not crushing the bottle, so कुछ लोग ऐसे होते हैं, they are misusing means what, वो बॉटल में पानी फिर से रिफ़िल करते हैं and then they are selling that. Okay, so we should avoid that situation. और ये avoid करने के लिए we should crush the bottle and tell to others also to do so. Okay, now next is, can you tell if at some place it did not rain for a very long period of time, what would be its effect on the life of the people there? So we know that water is very important thing for us. Okay, so if it will not be rain, so what will happen? People suffered, they will suffer with many of the problems. Okay, तो सबसे पहला प्रॉब्लम किसके ऊपर होता है? कल्टीवेशन. ओके, कल्टीवेशन के लिए पानी नहीं होता है, क्रॉप्स मतलब ये करने के लिए. ओके, एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम होता है. देन पीपल आर नॉट गेटिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड टू गिव इट फॉर एनिमल्स ऑल्सो. सो many of the problems arise when it is not rain. Okay, for a long period of time. Okay, now next one will study
water purification process on the water works. So we have studied that water is purified before it come to us. So many of the processes are there. So out of that, first we will study here in the picture it is given. The processes are, first one is settling, okay, then oxygenation, third one is filtration, and last one is chlorination. So see what is settling. So settling means the water from the water source is allowed to stand in large tanks. means large जो टैंक होते हैं तो उसमें वाटर को सेटल होने के लिए दी जाता है. मीन्स इफ़ आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा जो मडी वाटर रहता है, जैसे कि सपोज इट इज़ केप्ट इन द ग्लास, तो आप लोग देखेंगे जब उसको मीन्स हिलाया नहीं जाता है बिल्कुल भी, तो मड जो होती है वो ऑटोमेटिक जो बॉटम के पार्ट में क्या होती है, सेटल होती है. ओके, सो सेटलिंग में वही प्रोसेस मीन्स वही ये क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. एंड व्हाट इज़ यूज फॉर सेटलिंग? एलम इज़ ऑल्सो यूज टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग. ओके, अभी एलम वी नो दैट हर घर में एलम यूज़ होता है. एलम मीन्स व्हाट? फिटकरी. एलम की वजह से व्हेनेवर वी आर यूजिंग एलम, तो जो भी मड होती है तो वो क्या हो जाती है, बॉटम में सेटल हो जाती है. ओके, सो वी कैन यूज़ इट एट होम ऑल्सो फॉर क्लीनिंग द वाटर. ओके, नेक्स्ट is oxygenation. Air and water are allowed to mix with the help of pumps. See, you can see in the figure many of the pumps are there. और इसके अंदर क्या की जाती है, ऑक्सीजनेशन. नेम से ही आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन इज एडेड टू अ वाटर. दिस कॉजेज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर. ऑफकोर्स एयर डाल रहे मीन्स एयर इज कंटेनिंग ऑक्सीजन. ओके, और एयर जब पंप के थ्रू डालते हैं पानी के अंदर तो इट गेट ऑक्सीजन और उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. सो एवरीवन नो दिस वर्ड फिल्ट्रेशन. इन एवरी होम वाटर फिल्टर इज़ यूज. प्योरेट का होता है, केंट वाटर प्योरीफायर इज़ देयर. बहुत सारे घरों में वाटर प्योरीफायर लगा होता है. बट यहाँ पे ये प्रोसीजर बड़ा होता है. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ टू बी प्योरीफाइड. तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बहुत बड़ी मशीन लगी होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, सो वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग अ फिल्ट्रेशन मशीन. ओके, मशीन से वाटर को फिल्टर किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लोरीनेशन. सो क्लोरीन इज़ वॉट? एक्चुअली क्लोरीन इज़ केमिकल और ये जर्म्स को किल करता है. सो क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, क्लोरीन इज़ मिक्सड इन द वाटर टू किल द जर्म्स इन इट. मीन्स सबसे ज़्यादा हमारा प्योरीफिकेशन का हमारा एम क्या होता है, टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया बिकॉज इट कैन कॉज मैनी ऑफ द डिजीजेस. ओके, तो वाटर को सप्लाई करने के पहले उसके एक प्रोसीजर जो है क्लोरीनेशन है. मीन्स उसमें क्लोरीन इज़ एडेड टू अ वाटर. ओके, so up till here we will just stop because next topic, famine and water management, will discuss in the next session. I hope you understood the lesson very well. Thank you.